बच्चे नए हैं, मे बी एक दो बार आए हों, तो लेट मी जस्ट टॉक अ लिटिल बिट अबाउट व्हाट वी ट्राई एंड डू इन संडे स्कूल। तो संडे स्कूल में हम किताबें पढ़ते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, हम कोई सब्जेक्ट पर कोई डॉक्यूमेंट्री देखते हैं। तो एक महीने में ये कार्रवाई होती है। पढ़ते हैं अंग्रेजी किताब, इंग्लिश किताब, ठीक है। और हफ्ते महीने में एक बार जो डॉक्यू सीरीज आजकल हम देख रहे हैं वो है गुरु नानक की जर्नी पे। अमरदीप सर ने बनाई है। अमरदीप सर खुद आते हैं और उसके बारे में बात करते हैं और आपके साथ सवाल जवाब करते हैं। फिर एक हफ्ते हम किसी किसी को बाहर से बुलाते हैं और वो अ, अपने एरिया में माहिर होते हैं और वो आपके साथ बातचीत करते हैं। पिछले पिछले संडे हम मिले थे कार्तिक बजोरिया से। कार्तिक एक कम्युनिकेशन एक्सपर्ट है, ठीक है। अब और कभी कभी हम वर्कशॉप करते हैं। कोशिश होती है कि महीने में एक बार तो हो जाए। और इस जून के महीने में 5 संडे थे, तो हमने एक एक शख्स से मिले और एक हम वर्कशॉप भी कर रहे हैं। अगले हफ्ते वर्कशॉप है ग्रोइंग अप पे, तो प्लीज डू अटेंड। इट्स ऑन ग्रोइंग अप। राइट साइड स्टोरी इज द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज डूइंग इट। अप्रैल के मेरे ख्याल 12 तारीख, आई थिंक द संडे वॉज। वहां उस दिन या 11, उस दिन शिखा अग्निहोत्री आई थी जिससे हमने बातचीत की थी। तो वो वर्कशॉप लेंगी अगले संडे ग्रोइंग अप पे, ठीक है। और जब हमारा खाली उद्देश्य ये नहीं है कि आप देखें या सुने या बहुत भूल जाएं। हम चाहते हैं कि आप पार्टिसिपेट करें। तो जब हम आपसे सवाल पूछें, आप जवाब दें, आप सोचें। सोचने पे आपको जोर देना है, ठीक है। सोचने पे जोर देना है और उसके बाद लिखने पे। तो संडे स्कूल इज अबाउट रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन. Reflection is when you speak and also when you write. And it's about relationships. Okay? तो हमारा एक जॉय ऑफ लर्निंग डायरीज है जिसमें जो आप लिखते हैं वो पब्लिश होता है। Okay? तो I think पहली बार अंशिका शर्मा ने लिखा है। वो सेंचुरी स्कूल करनाल से है। अंशिका, आर यू देयर? Anybody else from Century School Karnal today? Anybody else? No? Somebody would like to read this out? This post, Beyond Ordinary, the Century School's Chronicle of Inner Light. Would somebody like to read it? Any volunteers to read? Sir, we have Arfa and Rishona here. Okay. Yes, sir, I can read. Okay, please do so. Thank you. Beyond Ordinary, the Century School's Chronicle of Inner Light. Each person is born with special qualities that make them different from others. The foremost step to discovering one's uniqueness is self-awareness. One has to observe what they enjoy the most, whether it's talent, a skill, or a hobby. Feedback also plays a crucial role in discovering one's uniqueness. Sometimes this journey becomes difficult due to fear, lack of awareness, or parental pressure. It may be the fear of judgment or the feeling of not being good enough. In the journey of discovering your uniqueness, don't forget
Never compare yourself with anyone. Be honest, curious, and confident. The real talent lies within, and the key to unlocking it is to believe in yourself and move forward with courage. Anshika Sharma, the Century School, Karnal. Thank you, Arfa. So really great points made in this, and that's why I wanted to read it. What do you say, Arfa? What are one or two things that you think are, which resonate with you? I think the last paragraph resonates with me the most Yeah. because Compare yourself. Go ahead. when I was younger, about like in seventh grade, I used to be really underconfident. But thanks to some friends encouraging me, I started um, not comparing myself and become more confident. Yes, absolutely. Comparison leads to that, and we all need friends and mentors who will encourage us, right? So that so that resonates with you. I think one of the reasons why I wanted Karthik to come and we showed that YouTube TED Talk was for you to understand that you have to also be comfortable with your own self, your own uniqueness, right? And we shouldn't be, given to pressure or judgment, right? We are unique and we are the best. That's how we should be thinking of ourselves. Okay, next one, which is also, similar line. Pranit Patra. Pranit there today. Somebody from Century School would like to read. If not, any other volunteers would like to read. Anybody else? Any volunteers? Okay, let me read then. We have Rishona Chopra. She has raised her hand for reading. Oh, sorry, I didn't see it. Rishona, go ahead, please. Louder, louder, louder. Everyone possesses something unique to explain how he discovered his own. He's right in saying that instead of trying to fit in, one must embrace their difference. His message is Rishona, we cannot hear you. now is it better now? No, Rishona, your mic is not doing good today. Last week it was fantastic. Could you come closer to your mic and speak, please? Is it better now? Slightly. Now? No, not I good. request Ranjit Singh not to send emojis like this and share files all the time in the chat. Chat is mentioned only for communication. If we ask some questions, please write the answers there. Okay, so Rishona's mic is giving trouble. I'm gonna try and fix this, please. We need you to participate and lead stuff. So let me read it. Karthik Bajoria shared how everyone possesses something unique and explained we how he discovered his own. He is right in saying that instead of trying to fit in, one must embrace their difference. His message is a powerful life lesson that one's uniqueness is not a flaw, but a strength that leads to the true path of life. Okay, so that's what Pranit has to say. Again, a very powerful thought that everybody is unique and they're trying to fit in. One must embrace the differences that you have versus others, right? So you are unique and you will be different. So this is ahead, Sarah.
Right. So this is on art, education, and mental health, right? And it's very interesting, and I'm actually really sorry that uh, Thursday sessions have stopped. I just started to really enjoy them. Uh, okay, let's see. The inner life of animals and their emotions. There are a few on this, and this is by Arabi. And Arabi says the inner life of animals refers to their emotions, thoughts, and consciousness, what they feel and experience beyond basic instincts. Studies and observations show that many animals experience complex emotions like joy, grief, empathy, jealousy, and love. For example, elephants mourn their dead. Dogs show loyalty and affection. Crows solve problems and remember faces. Pigs can play and even de- uh, be, pigs can be playful and even depressed when isolated. The concept challenges the traditional view that animals are purely instinct driven, highlighting their mental and emotional depth. It also raises ethical questions about how we treat animals in farming, research, and daily life. So, what I liked about this post is obviously Ardi has captured the essence of the book that we are reading, and I think maybe next week, I think, right, Manisha Brinda will be back with them reading another chapter. And Yes, sir. but Ardi has taken to the next question and tried to relate what Ardi sees in real life, right, around us, and that's the point around the ethical question about how we treat animals in farming, research, and daily life. So, okay. So this is again, on full what we did yesterday. Uh, about creating expression can lead to personal growth and healing. The power of empathy, imagination, and honest conversation. Good point by Manu. Right. But Amar, this is again Prem Kumar again about the author, and Peter Wallaben is the author. And again, the same point around, about how we treat animals, and also around how animals also have feelings. Right. This one, Shivika. Animals communicate with each other using various signals. She views the animals are more loyal than humans. Anybody has a thought on that? Animals are more loyal than human beings. Anybody have a thought on that subject? What do you think? Animals are more loyal than human beings? What do you think? Any thoughts? Anybody has a pet? Want to talk about it? Animals are more loyal than human beings. Anybody have a thought? No? So the purpose, as I said earlier, is to come here and sort of express yourself, right? So if you're not doing that, then you're missing an opportunity. The idea is to give you an opportunity to do that. And if you can't express yourself, you have a problem unmuting or whatever, and voices, mic, like if someone's having a problem with a mic today, please put it in chat. Okay, Minakshi Jugjiv, ma'am, sir. do you have a thought Yes, on this? I wish to. I want Yeah. to challenge this thought a little bit because animals are more loyal than humans. The thing is, the animals world ends when we're talking about pets, right? Begin and end with their master. They don't see beyond that, right? And if the master is feeding them well, treating him well, obviously their loyalty will not go anywhere else. They don't have to think of anything else. So they are loyal, let's put it this way. But would they be as loyal had they have to do the things that humans have to do?
They obviously don't have to do it, but would they be as loyal? And there are things like when they talk about cats being very traumatized when they leave their old place of residence, and then the presence of the human doesn't, really doesn't necessarily always help them. Okay, Right. so they are also attached to other things. So is it that they are more loyal, or is it that their life is comparatively simpler as than human beings, comparatively simpler than human beings? So that is what I would like to question. Yes, thank you for that. Anybody else? Any other thoughts? Okay. Yes. Okay. So this Aradhya Kashyap. Aradhya, are you there? Aradhya, are you there? Would you like to read this? Okay. So it talks about how uniqueness is not a flaw but our greatest strength. And this is what the TED Talk was about. Through personal stories, he shows how embarrassing our individualities lead us, how embarrassing our individualities lead to true purpose and fulfillment. I don't quite understand that, but yeah, I guess she means that our individualities and you bring them to the force, it leads to our true purpose and fulfillment, right? He encourages facing fear as a guide, not as an obstacle. The message is simple, get powerful. What sets us apart is exactly what the word needs. It's a motivating call to accept and express our true self with confidence. Some grammar needs to work better there. Okay. Yukta on the inner life of animals again. Again, this also is on the life of animals. So thank you for that, Sunbeam, there, Sarah. One thing I want to make a comment on, Karthik also spoke about his, you know, first not allowing children devices, then allowing children devices in his sessions, and he also talked about the use of AI. Right? I can tell you one thing, I always think of AI, uh, and I mean, to me, it reminds me of what happened when calculators came. Okay, when so there is not an iota of doubt in my mind that after calculators have come, my own mental math skills have gone down. Okay, there is not an iota of doubt on the matter. I try and consciously not use a calculator when I don't need to use a calculator. Okay, to make sure that the mind keeps working on those skills. I only try and use a calculator when I need to use a calculator. So I have found that people, I go to shops and people are like 30 and plus 45 and all. They're looking at like you can do it as a calculator. 8 plus 9 plus 7 plus 5. They're trying to do it on a calculator. And I'm saying like, why? It's important to keep your mind working. And AI is just like that. And that's the point Karthik made, that if you use AI to do your writing for you, you're making a big, big mistake. Use AI to catalyze your thinking, possibly, to do research. Don't use AI to do your writing. And I don't want to take names, but I have seen reflections which are straight out of AI. Okay, and you can make out they're out of AI. Okay, you're actually doing yourself a disservice. Okay, so I just wanted to make that point. जैसे भी आप देखते हो ठीक है, उसको सुधारो. AI का यूज लिखने के लिए मत करो.
आइडियाज लेने के लिए करो, रिसर्च के लिए करो, अपनी चीजें चेक करने के लिए करो। तो एआई का यूज सही, एआई का सही इस्तेमाल बहुत जरूरी है। प्लीज 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 don't let your mind, don't give up your own thinking to AI. Okay, You so know, let's so it makes us lazy. You write something and you feel it's not good enough, you put it into AI and you get something. So I mean, it makes us we don't use our mind enough after that. It's like everything with AI will take care of, and yeah, that is yeah. not good. That's not good for us. I know. So in fact, Rishona, this is a question for you. And if your mic doesn't work, just please think about it and put it down in chat, because I know you like to write and you do write. So what does writing do for you? Okay. If you can, unmute and talk to us about it, that's great. Otherwise, please do spend some time writing on chat, because I think your writing is fantastic and you come up with really good thoughts. So you can unmute and tell us, that's great. Otherwise, just do put it down in chat as to what you get when you write. Okay. Anybody else want to talk about what they get when they write, what they get when they reflect? Okay. आप लिखते हो तो क्या होता है? लिखते हो तो आप सोचते हो, करेक्ट? सोचते हो तो आपके थॉट्स क्लियर होते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है एक्चुअली। दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट टू राइट। And reading, what reading does for you is opens up another world. And that's the idea, to look beyond where you are today and at this world which is beyond us today. So that's the purpose of reading. And with that, let's start reading. So what had just happened in this book, which we're reading, which is the Door-to-Door Bookstore by Carsten Head, is that Gustav, who was running the bookshop earlier, has just passed away. Sabine has taken over, and Sabine has just told Carl that what he used to do is no longer necessary, and they will not deliver books via Carl. They will find the modern way of delivering books by courier or whatever, and his services will no longer be required. So it is a big shock to him, and but the other people in the bookstore sort of spoke in favor of Carl, because he was arguing with Sabine as to why it was good for for the customers and why it didn't really cost anything, but she was concerned around liabilities and subjects like that. And so they other people in the bookshop spoke up about how Carl was always very good with customers, and then Sabine said, okay, we'll talk about it later. So that issue was sort of got postponed, but very clearly it's going to happen. So in that frame of mind, he gets some books and he meets Shaska, and Shaska is not even 10 so far, and she says that she looks at him and says, "You're sad." So the question for you all is, how do you get to know when someone is sad? आपको कैसे पता लगता है कि जिसको आप देख रहे हो वो खुश नहीं है, वो नाखुश है? कैसे पता चलता है? How do you get to know somebody is sad? What happens? Can you make out when somebody is sad? रीना मैम, क्या होता है जब कोई सैड होता है तो कैसे दिखता है? Rita ma'am, you want to try?
Want to help us here? What happened? How do you know when somebody is sad? So from the expressions, Yes. So what would his or her expression be like? very pathetic at times. Otherwise, normally you meet somebody, they may show a smile, they'll sort of look at you, right? Yes, And the but very expression, pathetic, lost in his or her own world. yeah, yeah. Also, maybe if they're speaking, the tone of the voice may turn out to be different. Yes, They may sir. not show interest. We talked Yes, about, sir. people not uh, looking you in the eye. They may not earlier, but they may not look you in the eye because they are sad, right? So yeah, that's how Shaska figures out that he's sad because obviously he's down and out and he's looking like that, right? Where you So walk, maybe walking a little slowly. uh, one can make out the person is in a very low profile. Yeah, 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 yeah. So Akansha says when somebody is sad, most often we can see it in their behavior. They will start acting differently. Yeah, that's the thing. Versus how they are normally, they will come across differently. But you have to be looking out for these cues, right? Yes, So sir. that's the point. So Shaska is very, very, intuitive in this sense. He's able to figure this out. Okay, so let's start reading. Go a little, just go the earlier page, Isha. Maybe I think we had. Okay, let me start from here. So Carl is just sort of fallen down, and Shaska is saying, "Shall I carry your backpack today?" And uh, no, said Carl, standing up. His knees were throbbing, and the palms of his hands were grazed. It would feel wrong to do my round with no weight on my back. The backpack had slipped off as he fell, and Shaska handed it back to him. It's really heavy. Have you only got the books you like in there, or are you delivering others as well? I like your questions, Carl brushed the dirt from his clothes, but I can't cope with so many today. I don't have the energy for them. Right? When you're sad, you get low on energy. That's not an answer, he sighed. I'm also delivering books I don't like or ones that don't speak to me. No book speaks to everyone, and even a foolish book can provide intelligent thinking. A little bit of stupidity never did anyone any harm. You just have to take care it doesn't get out of hand and spread. It was a rare thing for Carl to lie, telling a customer that a book was out of print, and he always felt guilty when he did. He'd once refused to bring one to Effie because he had heard that a woman had sunk into depression after reading it. I've got another question. Another time, I just don't want to talk to you. Just one, please, please, please. Why don't you ever let it go? Shaska took that as a yes, although she would have asked her question even if she had if it had been a no. She had a feeling Carl would sink deeper into melancholy sadness. They didn't talk to one another. Her questions were life preservers for his thoughts, keeping them with her on the surface. Have you ever not even have you ever not taken on a customer or cancelled one? Carl was so irritated he forgot his sadness for a moment. Yes, out of self-defense. Just as I'm shutting up right now, out of self-defense. Was it Effie's husband? Did he hit you?
What? No, where's dog? The cat had walked away without a sound. Why then? Asked Shaska. Tell me. Cal, Carl sighed. He was really in no mood to give an answer. But he had even less desire to lose his second companion. Right dog had disappeared, so he didn't want Shaska to disappear now. But being alone would be even worse than Shaska's question. That's one thing that happens, right? When you're sad, some people don't want to be alone, some people want to be alone. So it varies, I guess. It was a woman who always broke the spine. The first thing she did with a new book was bend the covers back until it cracked. Grim, it occurred to Shaska that was a cue to spit on the ground in contempt, but disgust got the better of her. She said it made them easier to hold in one hand and they wouldn't fall shut so easily. She used to do it as soon as she unwrapped them. She could hardly wait. In the end, I couldn't bear the sound. Happy now? Shasta thought about the books in her backpack. I think you did the right thing. Can I buy you an ice cream? Because I answered your question? No, because ice cream always cheers people up. Not with all problems. Certainly not with mine. You're wrong. It works on anything. That's the great thing about ice cream. At Pino's, she insisted Carl had an ice cream called the Penguin, which had hazelnut chocolate cream swirled through it. It was astonishingly sweet, intensified further by Shaska's choice of sugar strand topping. She was right. The ice cream did help. And when two drops of it dropped on Carl's foot, making it look like it had eyes and a slightly crazy expression, they both laughed. That evening, Carl had told all his customers that they should order from him personally from now on, preferably when he called, but if not by phone. He could be contacted at almost any time. Otherwise, the risk was too great that Sabine Gruber would persuade them to stop using Carl's service. If that happened, there would be no one to object to his business. No customers, no Carl. Shaska had only brought books for those people to whom she had not yet given any. Dr. Foster found himself the owner of a world's cutest puppy's calendar, a gift he did his best, very best to look pleased about. For Mr. Darcy, Carl had brought a collector's edition of Pride and Prejudice, calling it a small token of the bookshop's gratitude for years of loyalty. Darcy protested he had only yesterday received a book to celebrate Carl's Panamanian birthday, and that woodworking was much more fascinating than he had ever imagined. Sir, Yeah, yes, sir, yes. Speak up. Okay, so, uh, Darcy's is not his real name, right? But Darcy is out of Pride and Prejudice. And so it's quite ironic that we brought him Pride and Prejudice collector item. And this reference to the Panamanian birthday is because the earlier day, uh, Shaska had gone and given him a book on carpentry because she thought that, there was a lot of wood around and he could do something with his hands in his, garden outside rather than just reading books. So that's why she gave him a book on carpentry. And she told him that Carl had sent it, and because it was his birthday,
and in Panama, he's from Panama, and from Panama, you gave people gifts on your birthday. So that's the background to this mention of birthday. And Sir. peeked from the corner of his eye at Shaska, who immediately grew 3 centimeters taller. So she's obviously really happy that he appreciated her book that she had brought for him. Although Effie had not placed an order that day, they passed by her house to see how she was. The windows were dark and no one opened the door when they rang. Carl dropped Dr. Eric Kastner's Miracle Home Pharmacy into her letter on the grounds that she needed help in many areas of her life. Although he wasn't at all sure whether Kastner's ingenious rhyme was right. Sitting at Hercules' kitchen table, Shasta asked how he had joined the Werther, how he had enjoyed the Werther. The title had been easy enough to remember. Do you know it's an epistolary novel. Epistolary novel is one that makes up of letters. Okay, so just letters from people, and that's what an epistolary novel is. In which the young Werther, a law student, is hopelessly in love with Lotte, who is engaged to another man. Shaska was taken aback. Those were the exact words Carl had used to describe the book. Hercules might as well have learnt them by heart. The book, red binding, Carl had chosen for him, was a volume summarizing all the most significant works of world literature. Hercules didn't seem at all pleased as he unwrapped it. Look of puzzlement on his face gave way to half-hearted smile as Shaska explained the reasoning behind Carl's gift. Now you don't need me to summarize the novels for you. You have a genuine expert in this book. Like a light switching off, half-hearted smile disappearing again. It was Shaska who understood. Leaning across to Carl, she whispered, "Watch his eyes." Then she opened the book and turned to Hercules. She drew the tip of her finger down the table of contents. These are the titles of all the greatest novels. Here's Rugen Island. There's a really famous one. Have you read it? No, not yet. But you must have read this one. She tapped the title and left her question hanging in the air for a moment. The Stein family sheep. Sadly, not that one either. But you must carry on telling me about the novels, Mr. Colhor. I'm sure this book is great, but the stories really come alive when you tell them. Of course, if you wish, I would love to continue. The light came on. Hercules wanted to hear the plots of Ruben Island and the Stein family sheep in great detail, and Carl told the stories as best as he could under the circumstances. It was a fine achievement, given he had never read either of the books since they didn't exist. As they stepped back onto the street, Carl took a deep breath. He can't read a word. Poor man. Why Rugen, sheep, and Stein? I went there last year on holiday with my dad. He stayed with the Stein. They have loads of sheep. They're so cute. It was the best I could think of in a hurry. Please, can we help Hercules? I think we have to. But a book won't help. No. But whatever we do to help him, he mustn't feel embarrassed because he does at the moment very much. Feeling embarrassed sucks. I know.
I get embarrassed all the time. They continued in silence. So Hercules is not really his real name, right? Hercules is basically the name given to him because of the way he looked, right? And as it turns out, he can't read, right? But he likes getting books delivered to him. And these names of these books, Shaska just made up, and the stories Dal had to make up. So why is Hercules ordering books if he can't read? Any thoughts? Why is Hercules ordering books if he can't read? For decoration, Decoration, yeah, that's possible. Yeah, I mean, books, yeah, I mean, the deck, you can get them home and decoration and make may look good to show off to other people that you're well read, or whatever. Yeah, possible. Any other reason? Yeah, but that's a possible, certainly a possible reason. So let's see. We have some inputs on writing. The first one is Akansha. When I write something, my thoughts get really clear, and I can set small tasks to make my thoughts come true. Every time while writing, I'm free to think any topic I like, and that's the best thing I like about writing. Lovely. So, Akansha, we hope to you to be a very regular contributor to Joy of Learning Diaries, but very well expressed. Shona. Arfa, do you want to read this? Rishona's message. Yeah, because I think Shona's mic's not doing too well. Okay. I feel writing opens perspectives. Often, when I'm writing, I try to write from different perspectives, not just my thoughts alone. I try to voice out the thoughts of others, objects, nature, or even people. It brings new emotions and ideas about several topics and gives you a better insight on what you're writing about. Writing for me is like a window to new perspectives. There are Yeah. times when I go through a writer's block where I can't seem to think of anything good enough to write about, and it's tempting to turn to AI for the same, but I feel that using AI for doing what you have a mind for spoils the creativity that is born from within. When we have a mind to think, a mind to write, hands to type, we shouldn't waste that. We shouldn't waste that blessing. Yeah, thank you for that, Rishona. Yeah, that sort of echoes what I was saying about use of AI, but you take it one step further. But yeah, uh, I remember Prakash Joshi had something, a quote in his book, something to do with opening windows. He was actually quoting somebody else, uh, you know, on what about reading and opening windows. I remember that. I forget the exact quote, but that was also very lovely. So thank you. So that's that I wanted Rishona to do this, and uh, and because I want you to appreciate what writing actually does. So that's the power of writing yourself. Okay, so Arfa, why don't you read what you've written on AI? Sure, sir. Read it. AI also wastes a lot of water. With hundreds of thousands of prompts being entered every minute, the system heats up too much and water is required to cool the machines. Estimates suggest that training an AI model the size of a human brain for a year could consume 126,000 liters of water.
Yeah. So, I was reading in the newspaper a few weeks ago. Many times when we use AI, we be polite, right? We say please. I use please a lot, or thank you, or whatever, as if we're talking to somebody. That also ends up costing a lot of money because many people do that. So now I'm trying to just, not give too many words to AI to use as well, because that's what, you know, yeah, I mean, it's very, very, the new technologies that we have are very, very energy intensive. Electricity, water, uh, very, very energy intensive. Akansha, can you read? Why don't you read what you've written? Akansha, are you there? Can you read it out for us? Yes, sir. Yeah, The please go story ahead. which you are reading, No, nowadays, the point you made now in chat. yeah, nowadays most of the people cannot express themselves what they are feeling or if they are sad. So you've written, nowadays, most of the people are sad, start smiling more and more, and we can identify if they're not happy. This is the biggest problem I see today, that most people couldn't express themselves properly if they're sad or want to say something. Interesting. So you're saying people are hiding their feelings, what you're saying. Yes, sir. And why do you think that's happening? I were to guess, I don't know. They cannot go express ahead. themselves. Say They again. cannot express themselves with any other strangers or even if they're with their own families or friends. Yeah, I mean they're hiding it, right? Because whatever they may be thinking people will judge, right? Maybe, I don't know. I'm just guessing. But suppressing Yes, your sir, feeling. Go ahead, Akansha. but I think that hiding their own problems can lead to depression also. And nowadays, most of the people are going in depression due to not expressing themselves fully. Yes, thank you for that. I think absolutely. I think that if you don't express yourself, if you hide your emotions, eventually one day it's going to come out in some form or the other. So it's important to express your emotions and have people around whom you can express your emotions to. Anybody like to say something on that? Sir, I want to ask something. Yeah, go ahead. How to overcome this problem of not expressing ourselves fully? I also have this problem. I cannot speak on the mic due to my shyness. Many times, if I want to ask some question, I cannot. Sir, how we should Well, overcome I this mean, if problem? you said because of your sinus, I mean, if it's coming in the way of speaking, and whether La you know you have to sort of deal with the physical aspect of it. But if it's not coming in your form of the speaking, and you think it gives a different sort of voice, that's fine. That doesn't matter. But Sir, if it's my a health physical is thing, happy. Nisha will have to mute these folks. Right, thanks. So if it's coming in the way physically, then you have to deal with the physical issue. But otherwise, I don't think you should worry about how you sound. It's okay. But I mean, even I sometimes many times don't express what I feel, and it adds to problems later. Minakshi, yeah. So, yes, sir. See, Akansha, the thing is hiding one's feelings, right? Happens because we don't trust people. Okay, we feel that, our emotions are not going to be valued, people are going to make fun of us. And that is the reason why we had to hide. We really don't trust people and we don't want the world to know that we are miserable, we are sad. Okay. And the other problem that you're talking about, that's
That's different. Even I can speak about myself. There was a time when I would be very scared of standing at the podium and speaking. Normally, as a teacher, I teach students and I address students and I talk to them all the time. But the moment the podium came in front of me, my legs would start shaking, and I would forget what I had to say and all those things. So that's something that one can overcome. You just need to do it once, and you realize that you can do it. That's it. Okay, you just need to be brave once, and you can do it. But hiding one's emotions is something quite different. Okay, not being able to communicate the reason for your sadness and keeping it to yourself is out of fear of being misjudged. Okay, where people may taking advantage of you, we're making fun of you rather than empathizing with you. So the thing is, when you see a person who's looking sad but has a smile pasted onto his face, and it's looking incongruous in a way, then the best thing is to empathize, not force the person to speak up, give him or her the time to open up, and then listen. Basically, you need to listen. It's not always that you can do something about it, but listen to that person, and that is what is required. That's all that. Yes, ma'am, but they can share it with their friends or their own families. But It's they not, also don't feel comfortable with them. yeah, but that is exactly the reason La they don't la have la la. I they, could they, sing the so hello. Go ahead. Okay, so let's get on. Minakshi also mentioned in chat about you know the drooping eyelids, and Rita ma'am has suggested that every girl should read Pride and Prejudice. So Rita ma'am, tell us why you think so. Rita ma'am, why do you say so? Why should every girl read Pride and Prejudice? Please tell us, Rita ma'am. There. Okay, I don't see her there. Okay, so let's get back book, because I just want to finish to about 3 pages. They continued in silence. At some point, the effects of the penguin ice cream began to wear off. There were days when a person needs more of it than they can eat. On their way home, they passed by the reader's home. Although they had nothing in their backpacks for him that day. "What's this book like?" asked Shaska. "Can you write a happy ending for it?" He hadn't yet read a single word. He knew he couldn't put it off any longer. Why does he say that? Because Shaska will probably keep harassing him on that if he doesn't read it. Carl pulled the big winged chairs from the French window. He didn't want to watch the city today. He didn't want to look out for his customers in the streets and the alleyways, nor for dogs on the roof ridges and terraces. There was too much pain and anxiety out there. In preparation for reading, he had brewed a large pot of herbal tea, which now sat over a tea light on a warming stand to keep the temperature. Carl divided readers into hares, tortoise, and fish. He himself was a fish, allowing a book to carry him in its current as its pace moved between fast and leisurely. Hares were speed readers, hurtling through a book and promptly forgetting what they had read just a few pages earlier, forever needing to flip the pages back to check. Tortoises flipped back too, because they had read so slowly that months passed before they finished the book.
Every evening they would read a single page, then fall asleep. Sometimes they would read the same page again the next night. Maybe they weren't sure how far they had got. Each of these animals could, at a moment's notice, transform into a curious lapwing, leaping to the back of the book, see the ending first, before reading the rest. To Carl's way of thinking, that was like going to a restaurant and eating dessert first. Of course, it was sweet and delicious, but the anticipation fueled by the preceding savory course was lost. So are you aware? Does anybody know eat meetha before eating khana? Anybody here? You eat meetha before eating khana? After eating khana? I think in some cultures in India you eat meetha before. Anybody? Any cultures in which you eat meetha before? I have some friends who are Marwadis and they always eat meetha first. So maybe. Regardless of which animal a reader was, opening a new book was always a significant moment. It made Carl uneasy each time. Would it live up to the expectation generated by the title, cover, and blurb? Would it perhaps even exceed them? Would the language and style succeed in moving him? He had barely read first sentence before he could hear the reader's warm baritone. Baritone is a deep voice, uh, like a singer's voice. The entire novel seemed to consist of words demanding to be spoken aloud. Anatomically impossible though it was, every line seemed to have been written with the ears. Of course, it contained brutal words too, but even in those passages, the reader had chosen words with a sound that was pleasing to the ear. Carl automatically began to read the book aloud, something he never usually did. He did not once reach for the tea. Carl found he was in fact reading two books at the same time. The deaf man who was so eager to learn tango was also secretly writing a novel. It told the tale of a hot air balloon pilot who built himself an airship so large with such a vast gondola that it could contain all of life's necessities, removing the need to ever set foot on the ground again. When the deaf man broke off his relationship with the dance teacher because she had been deceiving him all the while, he had at least allowed his pilot the happiness of landing to find the love of his life, giving the couple a life of both literal and metaphorical down to earth bliss together. Perhaps Shaska would accept one happy ending out of two. Carl smiled as he thought of her. He missed her, even more so than the delivery service. As he reached the end of the manuscript, Carl felt simultaneously very happy and a little melancholy, to sad. Even when an extraordinary book ends at precisely the right point, with precisely the right word, and anything further would only destroy that perfection, it still leaves us wanting more pages. That is the paradox of reading. Carl could tell the reader how much the book had moved him. Carl would tell the reader how much the book had moved him, but he very much doubted his opinion would suffice. The reader would have to experience for himself just how Babu, good, Babu. and Carl had an idea how to achieve exactly that. That's the end of
chapter 4. This is a long chapter, but what the really interesting thing for the last two chapters is how Carl is moved to trying to avoid Shastra to actually missing him. That's fascinating. And the last part about the reader, when we were talking about people not expressing themselves, and Karthik talked about not being afraid of, sort of not be afraid to sort of show your uniqueness. The reader has written this book, I think 10 years ago or something. So I think he sort of mentioned, he told them the last time it's written about in the book. So he's written it about 10 years ago, but he hasn't had the guts to show it to anybody. And Carl, who's knows a little bit about books, you have to say, thinks it's a really great book. So that just tells you, his shyness and not speaking about wanting to go for do anything with his book. And it's actually it's a great book, as Carl said. He's just been shy about it. Okay, anybody, any thoughts on what we read so far? Any questions? Okay, so Anisha, over to you. Thank you, sir. Am I audible? Yep. Okay. Good morning, everyone. Am I audible for all? Yeah. So before we start, just one kind request. Please do not unmute in between and speak. In case you want to say something, please write down in the chat box. That is what the chat box is. And please stop using the emojis or the little small things what all you all are sharing. I understand that you want to share something, but please write in the chat box. Apart from writing, don't use that. Okay. So to begin today, are you aware why we are here today? Pardon? Sunday school. Jugjiv sir has just said, like when he started his session, he said why we are here for the Sunday school. Are you aware why we are here? What are we supposed to do? Yes or no? We are here to read together. And why are we supposed to read? Reflection. To write reflections. Okay. Only reflections or something else? We are here to listen. Can you see my screen? Yep. Yeah, we can see it. So we are here for reading and listening. So what is listening according to you? Listening holds the key beyond the noise of words. See this picture. It gives you an idea what listening is doing for all of us. Action. Pardon? Asking right questions, listening different, open press pause, speak. Okay. So when we listen, our state of mind changes. हमारा जो attention है वो change हो जाता है. हम फिर सेंस करते हैं, डिफरेंट शेड करते हैं कि हमने जो सुना वो हमारे जो ऑलरेडी थॉट प्रोसेसेस वो क्या होते हैं. हम डिस्कवर करते हैं नई चीजों को, हमें नए इंसाइट्स मिलते हैं, हमें न्यू आइडियाज मिलते हैं, हम उन आइडियाज से सीखते हैं. पुराना ही आइडिया मिला है तुम तक. I'll request to please put yourself on mute. Radha Kumari.
बेटा प्लीज बीच में मत बोलिए, आई रिक्वेस्ट एवरीवन। ओके, सो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं एंड ये पूरा आपको दिखा रहे हैं कि हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं जब हम सुनते हैं। सुनना सबसे जरूरी चीज है। अब नेक्स्ट आ रही है ये स्लाइड, फ्रेश फूड इन एन एयर टाइट पैक। तो ये वाली स्लाइड को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? व्हाट कैन यू अंडरस्टैंड विद दिस? आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ये स्लाइड से आपको क्या दिख रहा है, क्या समझ में आ रहा है? कुछ लग रहा है आपको इसमें? एनीवन? इफ यू वांट यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या अनम्यूट करके बोल सकते हैं। मैम इसमें कोई आदमी ना मतलब कि कुछ लिए खड़ा हुआ है। तो वो लेके खड़ा है तो किस लिए खड़ा है? मैम फॉर सेलिंग। ओके, दे आर सेलिंग। क्या बेच रहा है वो? मैम एयर टाइट पैकेज फूड, फ्रेश फूड। बट क्या उसके टोकरी में हमें कुछ एयर टाइट दिख रहा है कि खुला सामान दिख रहा है? क्या दिख रहा है उसकी टोकरी में? खुला सामान। खुला सामान दिख रहा है। तो जब भी हम कोई चीज देखते हैं तो हमारे दिल में, हमारे दिमाग में कुछ आइडियाज आते हैं। तो ये हमें किस चीज को प्रमोट करता है? डायलॉग के लिए, द आर्ट ऑफ थिंकिंग टुगेदर। अभी हमने क्या करा, हम एक साथ हमने सोचना शुरू करा कि क्या वो बेच रहा है, क्यों बेच रहा है, किस लिए वहां पे खड़ा है। वहां पे लिखा हुआ है कि, क्या लिखा है यहाँ पे कि फ्रेश फूड इन एन एयर टाइट पैक, जबकि यहाँ पे एयर टाइट पैक्स नहीं है, यहाँ पे खुला हुआ सामान है। हो सकता है एयर टाइट हो, पिक्चर क्लियर नहीं है, ये भी हो सकती है। बट इससे हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि जब हम कोई चीज सुनते हैं, सुनने के बाद हमने कोई चीज देखी, तो उसे हमें डायलॉग यानी कि बात करने के लिए सोचना पड़ा। तो जब हम कुछ सोच रहे हैं तो हम काफी चीजें सीखते हैं। नाउ इस स्लाइड में क्या दिख रहा है हमें? ये हमें बेसिकली की पॉइंट्स दिखाती है जो एक शेयर कर रही है रिलेशनशिप लिसनिंग एंड रीडिंग के बीच में। जब हम सुनते हैं, सुन के समझते हैं एंड फिर दोबारा से उस चीज को हम रीड करते हैं, तो हमें क्या मिल रहा है? हमारी लैंग्वेज स्किल्स एनहांस हो रही है, हमारी लिसनिंग एंड रीडिंग की वोकैबुलरी के वर्ड्स एनहांस हो रहे हैं। हम जब भी कुछ, अभी जुगजीव सर ने पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, कुछ नई चीजें, कुछ नए शब्द आपको समझ में आए होंगे, कुछ आपकी वोकैबुलरी बिल्ड हुई होगी, ग्रामर समझ में आया होगा और उसको हमने कॉम्प्रिहेंड किया होगा नई चीजें सीखने के लिए। हमारी ओवरऑल लिटरेसी यानी हमारी पढ़ने की क्षमता, हमारी अंडरस्टैंडिंग को भी बढ़ाता है जब हम सुनते हैं और रीड करते हैं। हमें नए कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं, इट एड इन लर्निंग न्यू कॉन्सेप्ट्स, न्यू कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं और हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को एनहांस करते हैं। हमारी सबके पास एक लिमिटेड बुद्धि है, बट वो दिमाग, वो हमारे इंटेलिजेंस को हम थोड़ा सा आगे बढ़ के क्वेश्चंस करके, व्हाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, जब हम कोई भी चीज से ये क्वेश्चन करते हैं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। ना सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, हम उस चीजों को अलग ही तरीके से सोचते हैं और हमारे सोचने का, देखने का नजरिया चेंज हो जाता है। In the end, listening and reading it complement each other. Listening improves understanding of spoken language. Reading boosts recognition of written words, working together to improve overall communication. समझ में आया आपको कि लिसनिंग एंड रीडिंग से क्या क्या फर्क हो सकता है? तो सबसे पहले हमें अच्छे से सुनना चाहिए, सुन के समझना चाहिए, फिर हमें रीड करना चाहिए। तो आज हम रीड करने वाले हैं एक बुक। आपको पता है उस बुक का नाम क्या है? हमारी नेक्स्ट बुक का नाम पता है? ये है हमारी किताब। दिख रही है आपको मेरी किताब? यस मैम। क्या है बुक का नाम? क्या आपका बच्चा दुनिया का सामना करने के लिए तैयार है? स्क्रीन दिख रही है मेरी? या ओके, तो आज के हमारे
चैप्टर का नाम है निराश नहीं होना। तो निराश से आपको क्या समझ में आता है? आपको क्या समझ में आता है? निराश नहीं होना चाहिए, तो निराश से मतलब क्या है, पता है आपको? मैम उदास मतलब कि गुस्सा नहीं होना चाहिए। उदास, गुस्सा, निराश तीनों अलग अलग शब्द है, बट हम उसको वाइस वर्सा हम यूज करते हैं। चलिए हम आज किताब में देखते हैं कि निराश नहीं होने का मतलब यहाँ पे क्या है, और यही हमें क्रिटिकल थिंकिंग पे एनहांस करेगा। ठीक है, हमें सीमित निराशाओं को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन असीम आशा का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग। प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंस एक भाषण देने के लिए दिल्ली जा रहे थे। देवांग के स्कूल में उनके आने का बहुत उत्साह फैला हुआ था। जब हम खबर देख रहे थे, हम प्रोफेसर हॉकिंस के जीवन के बारे में बात करने लगे। देवांग और मैंने इंटरनेट पर अनेक अद्भुत जीवन के बारे में जानने के लिए 2 घंटे बिताए। 1963 में जब वह 21 साल के थे, स्टीफन हॉकिंस को एक बहुत ही गंभीर रोग हो गया, जिसका नाम था एमियोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस, और उन्हें बताया गया कि अब उनके पास जीने के लिए कुछ ही साल बाकी है। जब हम किसी को बताते हैं कि आपकी लाइफ खत्म होने वाली है, आपके लाइफ के सिर्फ कुछ ही साल बचे, तो वो जनरली नेगेटिविटी में चला जाता है, वो बहुत ही अफसोस करता है, उसको लगता है मैंने तो लाइफ में कुछ किया नहीं। बट यहाँ पे कहानी में क्या होता है, चलिए हम आगे देखते हैं। ALS एक ऐसा रोग है जिसमें न्यूरॉन्स प्रभावित होते हैं और नाड़ियां निरंतर खराब होती चली जाती हैं। प्रतिवर्ष विश्व भर में 3,50,000 लोग इससे प्रभावित होते हैं। ALS में मांसपेशियों का स्वचालन निरंतर प्रभावित होता है। रोजमर्रा के कार्य करना कठिन हो जाता है और व्यक्ति को पूरी तरह लकवा भी मार सकता है। हालांकि हॉकिंस व्हील चेयर पर आ गए थे, लेकिन फिर भी वह कैम्ब्रिज गए और कायस कॉलेज के एक प्रबुद्ध शोधकर्ता बन गए। शोधकर्ता का मतलब रिसर्चर। 1979 से 2009 तक उन्होंने कैम्ब्रिज में लुकेजियन प्रोफेसर का पद संभाला, जिस पद को 1663 में आइजैक न्यूटन ने संभाला था। फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी और यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के सदस्य, हॉकिंस को आइंस्टीन के बाद सैद्धांतिक भौतिकी के प्रबुद्ध वैज्ञानिक में से एक माना जाता है। ALS ने अनेक कठिनाइयों को जन्म दिया, जिन्हें हॉकिंस वे चुनौतियां मानते थे जिनको जीतना आवश्यक था। तकनीक, अगाध आत्मबल और आशा से उन्हें इन चुनौतियों को जीतने में मदद की। कैलिफोर्निया में बनाए गए विशेष कंप्यूटर उन्हें केवल 2 उंगलियों की सहायता से संवाद करने में मदद करते हैं, क्योंकि उनका अपने शरीर की गतिविधियों पर कोई नियंत्रण नहीं और अब वो बिल्कुल भी नहीं बोल पाते। उनका शरीर पूरी तरह ALS की गिरफ्त में आ चुका है, लेकिन उनका दिमाग अभी भी इस रहस्य को सुलझाने का अथक प्रयास कर रहा है कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। अब आप लोग एक बात को सोचो कि जिस इंसान का पूरा शरीर काम करना बंद कर दिया था, सिर्फ उसकी 2 उंगलियां चल रही थी, उससे उन्होंने पूरी दुनिया में किस तरीके से लोगों को बताया और किस तरीके से वो खाली ये सोचते ही रह गए कि सृष्टि यानी कि इस पूरी दुनिया की रचना कैसे हुई। तो उनकी थिंकिंग स्किल्स कितनी पावरफुल होंगी, वो खुद भी कितने पावरफुल होंगे कि सिर्फ 2 फिंगर की सहायता से वो कंप्यूटर को चला सक रहे थे, जो हम 2 हाथों से भी नहीं चला पाते ठीक से, कई बार हमें प्रॉब्लम होती है। हॉकिंस ने एक बार कहा था, मैं मृत्यु से नहीं डरता, लेकिन मुझे मरने की कोई जल्दी नहीं है। मैं उसके पहले बहुत कुछ करना चाहता हूँ। वह ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें कभी हार नहीं मानी और न कभी मानेंगे। ऑगस्टो और माइकल ओडोइन खूबसूरत कोमोरोस आइलैंड्स पर रहते थे, जहां उनके 5 साल के बेटे लॉरेंजो को व्यवहार जनित परेशानियों का अनुभव होने लगा। शुरू में तो डॉक्टरों को लगा कि शायद ये विदेशी वातावरण के साथ तालमेल बिठाने में कठिनाई के ही कारण, लेकिन समय के साथ लॉरेंजो की परेशानियां बढ़ने लगी, उनकी स्मरण शक्ति खोने लगी, उनकी दृष्टि भी धुंधली होने लगी और वह बिना वजह के गिरने लगा। जब वो 6 साल का था तो जांच में एड्रेनोल्यूक्यू डिस्ट्रोफी नामक बीमारी पाई गई। ALD एक असाधारण वंशानुगत
अनियमितता है जो कि एक्स क्रोमोसोम से संबंधित है। इसके मुख्यतः पुरुषों में ही होती है। यह अधिकतर 4 से 10 साल के बच्चों में देखी गई है। उस बच्चों की हालत गिरती ही जाती है, कभी कभी तीव्रता से व्यवहार जनित कठिनाइयां और अधिक बढ़ जाती है। तालमेल प्रभावित होता है और बहरापन और स्मरण शक्ति का खोना आम बात है। निगलने में कठिनाई होती है, दृष्टि भी कम होती जाती है और 1 साल के अंदर बच्चा पूरी तरह अपंग हो जाता है। इस रोग का अंत मृत्यु हुई है। ओडोन परिवार में सबसे अच्छे एएलडी विशेषज्ञ बाल्टीमोर में डॉक्टर ह्यूगो मोसर से परामर्श लिया। चूंकि इसके कोई विशेष थेरेपी नहीं थी, लॉरेंजो ने एक विशेष डाइट के लिए एक क्लिनिक में प्रयोगात्मक रूप से प्रवेश ले लिया। उस डाइट से कोई मदद नहीं मिली। ऑगस्टो और माइकल ओडोन ये मानने को तैयार नहीं थे कि लॉरेंजो मरने वाला है। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अधिकतर माता पिता शायद हार जाते, पर वे नहीं हारे। उन्होंने एएलडी के बारे में पढ़ना शुरू किया और कई घंटे मेडिकल लाइब्रेरी में प्रकाशित शोधों को पढ़ने में लगाया। उन्होंने एएलडी पर सबसे पहला सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें उन्होंने दुनिया भर के विशेषज्ञों को बुलाया जो इस रोग पर काम कर रहे थे। उन्होंने ये कल्पना करनी शुरू की कि एएलडी किस कारण से होता है और क्या थेरेपी काम कर सकती है। 2 साल में ओडोन परिवार को यह समझ में आया कि 2 प्रकार के खाना बनाने के तेलों का मिश्रण उस एंजाइम को रोक सकता है जो फैटी एसिड्स की लंबी श्रृंखला को आवश्यकता से अधिक उत्पादित करता था। उन्होंने ये तेल लॉरेंजो को एक फीडिंग ट्यूब के माध्यम से देना शुरू किया। लॉरेंजो की फैटी एसिड्स का स्तर कम हो गया और ऑगस्टो ने अपने खोज को प्रकाशित कर लिया। इन खोजों के आधार पर डॉक्टर मोसर को अपनी सभी एएलडी के नन्हे मरीजों को ये तेल देने का प्रोत्साहन मिला। अब जब भी हमारे घर में कोई बीमार पड़ता है या कोई बीमारी के कारण दूसरे लोग बताते हैं कि हाँ इसकी जिंदगी खत्म होने वाली है, तो लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं। वो गॉड से प्रे करते हैं कि लाइफ में और इनको मनोबल मिले और जीने के साधन मिले। पर यहाँ पे कुछ और हुआ। यहाँ पे मनोबल प्रोत्साहन में बदल गया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया। पेरेंट्स ने रिसर्च करके नई चीजें का आविष्कार किया और उसमें उन्हें पता चला कि 2 तरीके के ऑयल को मिक्स करने से इस बीमारी का कुछ इलाज हो सकता है। तो आगे वो और क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। यूके का एक स्टैफोर्ड परिवार यूएस पहुंचा और उन्होंने अपने बेटे बैरी को ये तेल देना शुरू किया। स्टैफोर्ड परिवार ने पाया कि उनका छोटा बेटा ग्लेन, जो केवल 2 साल का था, लेकिन उसमें कोई लक्षण स्पष्ट नहीं थे, उसमें भी ये विकृत जीन थे। हालांकि उसमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं थे, फिर भी डॉक्टर मोसर ने ग्लेन को ये तेल देने का निश्चय किया। लेकिन कुछ सालों में यह स्पष्ट हो गया कि लॉरेंजोस तेल एएलडी के बढ़ने को नहीं रोक सकता था। बैरी, स्टैफोर्ड और अन्य बच्चों की मृत्यु हो गई। लॉरेंजो जीवित तो रहा, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। डॉक्टर मोसर ने हार नहीं मानी। उन्होंने उन लड़कों को लॉरेंजोस तेल देना शुरू कर दिया जिनमें वह जीन तो थे, लेकिन कोई लक्षण नहीं थे। उनके इस प्रयोग के चमत्कारी परिणाम दिखाए। लॉरेंजो तेल शुरू करने के 10 साल बाद भी 70% लड़कों में कोई भी लक्षण विकसित नहीं हुआ। लॉरेंजो को तो नहीं बचाया जा सका और उसकी 30 साल की उम्र में मृत्यु हो गई, लेकिन तब से लेकर अब तक अनेक जीवन बचाए जा सके हैं। ग्लेन स्टीफोर्ड इस तेल को लेने वाला पहला लड़का आज 20 साल के बाद भी स्वस्थ है। आज एएलडी के परिणाम बहुत अलग है। इस विकृत जीन वाले लड़के को पहचाना जा सकता है और लॉरेंजोस तेल उन्हें वह अवसर दे सकता है कि इस घातक बीमारी के लक्षण उनमें विकसित नहीं हो।
आई एम सॉरी, आई थिंक आई लॉस्ट कनेक्शन। कितनी देर पहले हुआ ये? मीनाक्षी मैम? हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, Manisha, you're audible. ओके, कितनी देर पहले मैं यहाँ से चली गई थी? आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड। About 1 minute, I think, not more than that. ओके, मीनाक्षी मैम, आप होस्ट बन गए हो बाय डिफॉल्ट, तो कैन यू प्लीज शेयर द होस्ट राइट्स टू मी, विथ मी? I don't know मैं कैसे host बन गई, किसने कर दिया? नहीं मैम, प्लीज डू I'll दैट। I don't even मैम that's done. पार्टिसिपेंट Just लिस्ट में जाइए, मेरा नाम देखिए, राइट क्लिक करिए। अच्छा. I've made you the host. Okay, sorry. या, थैंक यू। ओके, आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंसेस, आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड, बीच में मैं चली गई थी। सो विल स्टार्ट हियर। एक डॉक्टर होने के नाते मुझे वे प्रकरण बहुत अचंभित करते हैं जो हमें मनुष्य शरीर को सीमाएं और असंभव शब्द का परिभाषा का पुनः आकलन करने को मजबूर करते हैं। ऐसे ही एक प्रकरण है जोड़ी मिलन। एक हंसमुख और शरारती बच्ची का 3 साल की उम्र में जोड़ी को दौरे पड़ने लगे और उसे एंटी एपिलेप्टिक दवा दी जाने लगी। उसके दौरों की पुनरावृत्ति और गंभीरता बढ़ने लगी। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि उसे 24 घंटों में 100 दौरे पड़ते थे। उसे और अधिक एंटी एपिलेप्टिक दवाई दी गई, लेकिन दवाओं का मिश्रण उसके दौरों को नियंत्रित नहीं कर पाया। जोड़ी की हालत और बिगड़ गई। उसे आंशिक लकवा हो गया और वह चलने में लाचार हो गई। जोड़ी के माता पिता को बताया गया कि वह रास्मुसेंस एनिसफेलिटिस नामक रोग से पीड़ित थी। आरी एक असाधारण मस्तिष्क रोग है जिसमें मस्तिष्क में सूजन हो जाती है और इसका परिणाम भयावह होते हैं। ये 5 लाख से 10 लाख व्यक्तियों में से किसी एक को होता है। इसका प्रभाव मस्तिष्क के केवल आधे भाग पर ही पड़ता है। आरई अधिकतर सामान्य बच्चों में ही होता है। ये 2 से 10 साल की उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है। इसके लक्षण हैं निरंतर दौरे और सीखने की क्षमता में गिरावट। जैसे जैसे रोग बढ़ता जाता है, शरीर के एक तरफ के अंगों की कमजोरी बढ़ने लगती है। इन लक्षणों को बढ़ने में 1 से 2 साल लग जाते हैं, लेकिन इसके सही लक्षण अभी भी अज्ञात है। आरई को ऑटो इम्यून रोग माना जाता है। बच्चों की अपनी ही रोग प्रतिरोधक कोशिकाएं मस्तिष्क में प्रवेश करती हैं और सूजन और क्षति करती है। संभवतः किसी वायरल इन्फेक्शन से इसकी शुरुआत होती है। सूजन से मस्तिष्क को स्थायी क्षति पहुंचती है और मस्तिष्क सिकुड़ जाता है, जो कि दौरों से और ज्यादा बिगड़ जाता है। चूंकि दौरे निरंतर बढ़ते जाते हैं, अतः इसका एकमात्र उपाय है मौलिक सर्जरी। यहाँ मौलिक शब्द का बहुत ही हल्के संदर्भ में प्रयोग किया गया है। इस सर्जरी में आधे मस्तिष्क को निकाल दिया जाता है। जी हाँ, आधा मस्तिष्क। इस प्रक्रिया को रेडिकल हेमिस्फेरेक्टोमी कहा जाता है। जब जोड़ी के माता पिता को बताया गया कि इस बीमारी का एकमात्र इलाज रेडिकल हेमिस्फेरेक्टोमी है, तो उन पर तो मानो गाज ही गिर गई। अब आप ये सोचिए कि अगर किसी पेरेंट को बताया जाता है कि सिर्फ सर्जरी ही एकमात्र उपाय है, बच्चा भी बहुत छोटा है, तो नेचुरली को भी इस चीज को सोच के बहुत ही परेशान हो जाएगा। यहाँ इसके भी पेरेंट्स को सेम होता है, वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं। किसी भी माँ बाप को ऐसा ही लगता। जरा कल्पना कीजिए कि एक माता पिता होने के नाते ये बताया जाए कि एकमात्र कारगर इलाज है कि आपके बच्चे के मस्तिष्क का आधा भाग निकाल देना। 10, 20 या 30% नहीं, पूरा 50%।
सोच के ही मुझे तो बहुत ही कपकपी आ रही है, और आप लोग को भी लग रहा होगा कि 50% निकालने के बाद किस तरीके से वो आदमी, वो बच्चा किस तरीके से जिंदा रहेगा, उसकी आगे की लाइफ क्या होगी। कुछ एक क्वेश्चंस तो हम सबके दिमाग में आ ही रहे। किसी भी इलाज की इत्तेहाम और क्या हो सकती है। हम जानते हैं कि मस्तिष्क का प्रत्येक भाग शरीर के विशिष्ट कार्यों को नियंत्रित करता है, जैसे कि बोलना, देखना और सुनना। कुछ ऐसे क्षेत्र जो महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करते हैं मात्र कुछ सेंटीमीटर छोटे हैं। जब छोटे हिस्से को निकालने से ही शरीर के सामान्य कार्य पर प्रभाव पड़ सकता है, तो आधे मस्तिष्क को निकाल देने का परिणाम क्या होगा। महिला परिवार को ये समझ आ गया, क्योंकि ये रोग मस्तिष्क के केवल आधे ही भाग को प्रभावित करता है। उस आधे भाग को निकाल देने से दौरे आने बंद हो जाएंगे। लेकिन शरीर के उन बाकी कार्यों को क्या होगा जिन्हें मस्तिष्क का वह आधा भाग नियंत्रित करता है। यह जोड़ी के माता पिता की सबसे बड़ी चिंता थी। क्या वो अपने हाथ पैरों का प्रयोग कर पाएगी? क्या वो बोलना, पढ़ना और लिखना कर पाएगी? क्या वह स्कूल जा पाएगी? क्या वह अपनी वैसी खुशहाल जिंदगी जी पाएगी जो आर्य रोग होने के पहले? इस परिवार ने डॉक्टर बेन कार्सन से परामर्श लेने का निश्चय किया, जो बच्चों के प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन हैं और जो विशेषज्ञ सलाह देने के लिए हमारे हॉस्पिटल में भी आए थे। डॉक्टर कार्सन ने समझाया कि आधे मस्तिष्क को निकाल देने से दौरा पड़ना बंद हो जाएगा। उस आधे भाग के निकाले जाने के बाद बनने वाले खाली स्थान को तरल पदार्थ भर देगा। एक बच्चे के मस्तिष्क में न्यूरोप्लास्टी अधिक होती है, जो मस्तिष्क के बचे हुए आधे भाग के न्यूरॉन्स को छोड़े हुए न्यूरॉन्स का कार्य संभालने देता है। तो एक तरफ से मस्तिष्क से स्वयं को पुनः जोड़ने की क्षमता होती है, हालांकि दूसरी तरफ के हाथ के कार्य नहीं हो पाते। बच्चे अपने स्वस्थ हाथ पैरों का प्रयोग करने की आदत डाल लेते हैं। जब भाषा का भाग निकाल दिया जाता है, तब भी उनके भाषा संबंधी कौशल को काफी हद तक वापस पाया जा सकता है। बच्चे पहले का सीखा हुआ नहीं भूलते। सर्जरी के समय बच्चा जितना छोटा होगा, उसकी हालत के अनुसार ढलने की क्षमता उतनी ही बेहतर होगी। उन्होंने बताया कि सर्जरी तो 12 घंटे ले सकती है, लेकिन बच्चे के स्वस्थ असामान्य होने में कई हफ्ते और महीने लग सकते हैं। डॉक्टर कार्सन ने उन्हें आश्वासन दिया कि जोड़ी पहले से बेहतर हो जाएगी। जोड़ी के परिवार में अनेक जीवन का सबसे कठिन निर्णय लिया और सर्जरी के लिए स्वीकृति दे दी, क्योंकि यही उनकी आखिरी उम्मीद थी। हेमिस्फेरेक्टोमी निर्बाध रूप से हो गई, लेकिन ऑपरेशन के बाद का समय ही परीक्षा का समय था। जोड़ी को लंबे समय तक रिहैबिलिटेशन से गुजरना पड़ा और आखिरकार उसकी शक्ति वापस आ ही गई। दौरे आने बंद हो गए और आधे मस्तिष्क के साथ उनका शरीर के कार्य पुनः सुचारू रूप से होने लगे। धीरे धीरे लेकिन निश्चित तौर पर वह स्वस्थ हो गई। जोड़ी ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। 8 साल की उम्र में वे दूसरे ग्रेड में प्रथम आई। उसने अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री पूरी करी। जब जोड़ी टीचर बनना चाहती है, उसकी माँ लिन हेमिस्फेरेक्टोमी फाउंडेशन में आरई स्पेशलिटी डायरेक्टर और अन्य परिवार को आरई का सामना करने में मदद कर रही है। इस मामले में शायद लिन से बेहतर वकालत कोई नहीं कर सकता। वह जानती है कि आरई पीड़ित बच्चों की देखभाल करना क्या होता है, इन परिस्थिति का सामना करने में क्या कठिनाई आती है, रेडिकल सर्जरी के लिए स्वीकृति देने के लिए कितनी शक्ति जुटानी पड़ती है, और सर्जरी के बाद अपने बच्चों को धीरे धीरे एक एक कदम करके एक एक कार्य करने के लिए ठीक होता देखने के लिए कितने धैर्य की आवश्यकता होती है। लेकिन इन सबसे ऊपर वह ये जानती है कि कैसे सबसे ये कहना है कि कभी हिम्मत नहीं हारे। हिम्मत कभी भी नहीं हारना चाहिए। फ्रेया को एक दिन में 200 दौरे पड़ते थे। उसने 2010 में मेलबर्न में हेमिस्फेरेक्टोमी सर्जरी कराई और अब दौरों से मुक्त है। कैमरॉन मार्ट ने 9 साल की उम्र में यह सर्जरी कराई और 6 साल बाद वह एक बैले नृत्यांगना बनना चाहती है। 7 साल की गेमा हॉकली, जो दाएं हाथ से काम करती थी, उसका मस्तिष्क से बाएं भाग के निकाल दिया गया।
4 साल बाद वह अपने पसंदीदा खेल सॉकर और बास्केटबॉल खेल रही थी। स्कूल में गेमा को उसकी साफ सुथरी लिखावट के लिए बहुत मान्यता मिली, जो कि एक असाधारण उपलब्धि है, क्योंकि अब वो बाएं हाथ से लिखती है। इमेजिन एक राइट हैंडर लेफ्ट हैंड से लिख रहा है और उसके बावजूद उसकी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी है कि सब लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। हैट्स ऑफ टू द चाइल्ड। इस सर्जरी से अनेक बच्चों को लाभ मिला है। जरा कल्पना कीजिए आधे मस्तिष्क के साथ न सिर्फ कार्य करना बल्कि सर्वश्रेष्ठ कार्य करना। जब आरई से पीड़ित बच्चे जिन्हें स्वस्थ होने के लिए अपना आधा मस्तिष्क खोना पड़ता है, उनके माता पिता आशा नहीं छोड़ते, तो हम में से कोई भी कैसे निराश हो सकता है। पिछले कुछ दशकों में डॉक्टर कार्सन ने अपने सर्जरी की तकनीकों को नया रूप दिया। जहां पहले वह संपूर्ण आधे मस्तिष्क को एक ही बार में निकाल देते थे, अब वो उसे थोड़ा थोड़ा करके निकालते हैं। इससे बाकी के आधे मस्तिष्क पर जोर कम पड़ता है और परिणाम भी बेहतर होता है। हम सब कितना कुछ करना चाहते हैं, अक्सर हम प्रयास करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। हमारे साथ छोड़ देने के न्याय संगत कारण होते हैं, या कम से कम हम ऐसा सोचते हैं कि कार्य न्याय संगत है। मैं जब भी सुनता हूँ कि लोगों ने हिम्मत छोड़ दी है, तो उन्हें गंभीर रोगों से ग्रसित बच्चों के बारे में सकारात्मक जोश के बारे में बताता हूँ। उनके लिए तो हर दिन एक युद्ध है। जरा कल्पना कीजिए, दर्दनाक इंजेक्शन और जांच, बार बार अस्पताल में भर्ती होना, थेरेपी के साइड इफेक्ट्स और इन्फेक्शन की संभावना का सद्भाव कैसे होता है। अंतिम परिणाम की अनिश्चितता के बावजूद वे परिवार कितनी बहादुरी से चुनौतियों का सामना करते हैं। डॉक्टर कितने भाग्यशाली हैं कि जब जब वे हिम्मत हारने लगते हैं, तो जिन मरीजों का वे इलाज करते हैं, उनके परिवार उन्हें हिम्मत नहीं हारने के लिए प्रेरित करते। जब भी मुझे ऐसा लगता है कि परिस्थितियां बहुत चुनौतीपूर्ण हैं, तो मुझे बस इतना करना होता है कि अस्पताल में भर्ती बच्चों के साथ कुछ अतिरिक्त समय बिताऊं। उनकी तुलना में मेरी चुनौतियां तो बहुत तुच्छ प्रतीत होती है। जीवन में असली कठिनाई क्या है, इसका सही आकलन करने के लिए शिक्षकों और अभिभावकों को अस्पताल जरूर जाना चाहिए। एक संक्षिप्त वार्तालाप असाध्य लगने वाली चुनौतियों के प्रति उनका नजरिया बदल देगा। जब देवांग अपने जीवन में कठिनाइयों की बात करता है, तो मुझे उसे सिर्फ ये याद दिलाना पड़ता है कि उसके पास क्या है। आशा से बढ़कर कोई दवाई नहीं, आने वाले कल से बढ़कर कोई भी बड़ा प्रोत्साहन और कोई शक्तिशाली टॉनिक नहीं है। ओरिसन स्वीट मॉडल। तो क्या सीखा आज हम सबने इस कहानी से? कुछ सीखा आज हमने? You all can unmute and speak. मैम कभी निराश नहीं होना चाहिए। कभी निराश नहीं होना चाहिए। और क्या सीखा? और कभी हार नहीं मानना चाहिए। कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम उत्साह के साथ आगे बढ़ेंगे, तभी तो हम हर चीज को करने की और अच्छे तरीके से करने की के लिए हम प्रोत्साहित होंगे और आगे बढ़ेंगे। मैम कितने लोग हमेशा खुश हैं? रहना चाहिए। हाँ बेटा राधा, क्या कह रहे हैं आप? मैम हमेशा खुश रहना चाहिए। हमेशा खुश रहना चाहिए, और नहीं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम खुश रह सके। यस मैम। तो अब जो आज हमने देखा कि लिसनिंग से क्या फायदे होते हैं, रीडिंग से क्या फायदे होते हैं, तो आप लोग अब रिफ्लेक्शन लिख के मुझे भेजेंगे। रिफ्लेक्शन के क्या फायदे हैं? आप उस चीज को क्रिटिकली सोच रहे हो। क्रिटिकली सोच रहे हो तो आपके लिए 2, 3, 4, 5 सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आपको लगता है ये क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से लिखें या दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। तो सब तरीके से लिख करके जब आप मुझे भेजेंगे और आपका लिखा हुआ और 4 लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, तो उससे हमें बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। खुशी होती ही नहीं होती आपके रिफ्लेक्शन को जब पढ़ा जाता है सबके सामने। तो इसीलिए अपने रिफ्लेक्शंस लिखिए, अच्छे तरीके से लिखिए और लिख करके मुझे भेजिए। मैं उनको पोस्ट करूंगी और बहुत अच्छी तरीके से पोस्ट करूंगी। मेरे पास चैट बॉक्स में 2 चैट्स आए हैं।
हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, वेरी गुड, नेवर गिव अप, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और कुछ कहना चाहेंगे आप लोग इस चैप्टर के बारे में? आप अनम्यूट कर सकते हैं। अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही हम हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, यस हरदीप, वेरी गुड। हिम्मत तो हमें कभी भी नहीं हारनी चाहिए, बिकॉज जब हम हिम्मत हारते हैं तो काफी हमारे लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो हिम्मत तो हमें नहीं ही हारनी चाहिए। और लिसनिंग एंड रीडिंग के बारे में तो हमने पहले ही समझ लिया है। LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये चारों चीजें जो है एक साथ हमारे साथ जुड़े हुए, क्योंकि अगर हम रीड नहीं करेंगे तो हमारे जो चैप्टर्स है, जो हम पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बारे में हम सोच ही नहीं सकते। एकेडमिक सक्सेस के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम उसको रीड करें। और लाइफ लॉन्ग लर्निंग, वोकैबुलरी, लैंग्वेज, सब कुछ ही हमारी रीडिंग करने से बढ़ जाती है। तो आप लोग रीडिंग करिए, दूसरों की बात को ध्यान से सुनिए, समझिए कि दूसरा क्या कहना चाह रहा है, और इस तरीके से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। आकांक्षा कुछ कहना चाह रही है। आकांक्षा, आपने क्या लिखा है? आपने लिखा है हम आवर प्रॉब्लम्स आर मच स्मॉलर देन दीस स्टूडेंट्स हु आर इन हॉस्पिटल। ऑफ कोर्स, वेरी गुड। आपने सोचा, आपने एम्पैथी दिखाई, आपने समझा कि उनकी प्रॉब्लम ज्यादा है। जिस इंसान को पता है कि वो कुछ एक साल के बाद इस दुनिया से अलविदा ले लेगा, वो बच्चा जो 4-5 साल का है, जिसे पता भी नहीं कि लाइफ एंड डेथ के बीच का डिफरेंस क्या है, बट उसकी लाइफ खत्म होने जा रही है, तो नेचुरली उसकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम से तो बहुत ज्यादा बड़ी है, हमारी प्रॉब्लम बहुत छोटी है। तो आप लोग जब रिफ्लेक्शन लिखेंगे, जरूरी नहीं है कि आपको लिख करके भेजना है, आप मेरे को ड्राइंग भी भेज सकते हैं अपनी लिखी हुई, अपने आप वॉइस नोट भी भेज सकते हैं, आप एक वीडियो बना सकते हैं और उसको भी मुझे भेज सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू पब्लिश। सी यू फॉर नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीक। प्लीज नेक्स्ट वीक आइए और हमसे जुड़े रहिए, जैसे कि हम आगे भी आपको इस तरीके की कहानियां सुना सके, समझा सके। रीना मैम, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। आप अपना चैट पढ़ना चाहेंगे रीना मैम? यस मैम। हाँ, बताएं आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैम, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मतलब परिस्थितियां चाहे जैसे भी हो, हमें उनका सामना करना चाहिए। एग्जैक्टली, ट्रू, वेरी ट्रू। तो हमें हर परिस्थिति को चैलेंज के तरीके से नहीं, सोल्यूशन के तरीके से देखना चाहिए। हमें उसके साथ खड़े होना चाहिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी परिस्थिति हो, वो हमें एक क्वेश्चन की तरह देखनी चाहिए, और हर क्वेश्चन का 4, 5, 6, 7 जैसे कि हम देख रहे हैं, उस तरीके का हमें उत्तर मिल सकते हैं। तो उसका बेस्ट उत्तर देखिए, समझिए और आगे बढ़िए। गीतिका कहना चाहिए, यू कैन डू एनीथिंग, जस्ट यू वांट इज कॉन्फिडेंस, बिकॉज लाइफ इज ब्यूटीफुल एंड एवरी सिचुएशन, नेवर गिव अप। वेरी गुड गीतिका, कॉन्फिडेंस की यस हमें जरूरत है, और अपनी बात को आगे बढ़ाना, किस तरीके से आगे रखना, सब चीज की जरूरत है। इसके साथ हम इस सेशन को खत्म करते हैं। आप रिफ्लेक्शन भेजिए, अगले वीक हम पढ़ेंगे। और हमारे पास राइट साइड स्टोरी से एक मैम आएंगी, जो हमें और अच्छी तरीके से और भी बातें समझाएंगी, सिखाएंगी। तो नेक्स्ट वीक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू।